Why your finger starts popping as soon as you bend it? Do you actually have trigger finger? And if you do, then what is its treatment at home? Coming up. Now before we start the video, I want to tell you that this video is gonna be a little bit longer, so it's better कि आप इसको 1.5x या 2x speed पे देखें. Also I've added time codes and chapters for you, तो आप directly अपने favorite part of the video पे skip कर सकते हैं. You can check them out in the description or in the what is it called, timeline. So first of all, trigger finger होता क्या है? देने की कोशिश की. हमारे हाथ में कुछ ऐसी पुलीज होती हैं जो कि जब आप अपनी फिंगर्स बेंड करते हैं तो आपके जो फिंगर मसल्स के टेंडन हैं उनको बल्ज आउट होने से प्रिवेंट करती हैं, उनकी इजी एंड स्मूथ ग्लाइडिंग में हेल्प करती हैं. तो मोस्ट कॉमनली जो हमारी A1 पुली होती है जो कि यहाँ पे होती है वो अफेक्ट हो जाती है ड्यू टू सम इन्फ्लेमेशन और ओवरयूज और व्हाटएवर, जिसकी वजह से A1 पुली के अंदर की जो स्पेस है वो कम हो जाती है एंड योर टेंडन इज नॉट एबल टू ग्लाइड थ्रू दैट पुली एज इजीली एज इट यूज्ड टू डू. अब जब वो स्पेस कम है और अब आप जब अपनी फिंगर्स बेंड करेंगे तो वो टेंडन यहाँ से जब ग्लाइड करता है इट क्रिएट्स अ पॉप साउंड बिकॉज अब वो ग्लाइडिंग स्मूथ नहीं है and that inflammation, that popping causes pain. Trigger finger is most commonly found in your this finger and your ring finger. In some cases it can also be found in your thumb. In that case it is known as trigger thumb. अब अगर आपको भी trigger finger है और आप ये सोच रहे हैं कि दुनिया की सारी बीमारियां मेरे साथ ही क्यों होती हैं, तो ऐसा नहीं है. Trigger finger is common in people that do certain activities जिसमें कि आपकी fingers stay in a bent position for a prolonged period of time. अब ये activities could be carrying your girlfriend shopping bags for a prolonged period of time, carrying a briefcase, or maybe writing for too long, or rock climbing. Or it can also happen if you hold some small sharp tools, such as some watchmakers do. Now, what are the symptoms of trigger finger? Initially, you may just feel clicking of your finger, but it is painless. Gradually, the pain starts appearing. In severe cases, if the inflammation is more, then you can have your finger stuck in a bent position. The pain is most commonly felt at your knuckle on the inner side or this joint of your finger, which is known as the proximal interphalangeal joint. Now, as the condition progresses, you could feel some stiffness and swelling in your finger, especially in the morning. Your finger could be locked in a bent position, as I told earlier. You could feel a painful nodule in the front of your knuckle. You can lose the finger flexion movement or finger extension movement. And in very severely chronic cases, you could feel a thickness at the base of your finger and the pain may radiate to your palm or your fingertip. If you are a diabetic, you are 4 times more likely to have trigger finger. Also, diseases like rheumatoid arthritis or gout that cause connective tissue changes are associated with conditions like trigger finger. अभी मैं सीधा मतलब की बात करेगा treatment. So trigger finger is basically an inflammatory condition. तो सबसे पहले काम हमें ये करना है कि जब आपकी फिंगर में वो साउंड आने लगी है बट यू आर नॉट हैविंग एनी पेन, तो उसको बजा के उस पर भरतनाट्यम करने का मतलब नहीं है. उसको बार बार इरिटेट मत कीजिए, आपका टिश्यू और ज़्यादा इन्फ्लेम होगा एंड योर कंडीशन विल प्रोग्रेस. अभी आपके इसी भरतनाट्यम को रोकने के लिए द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज स्प्लिंटिंग. ये कुछ Amazon पे मैंने स्प्लिंट्स देखे थे, इनमें से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं. बेसिक पर्पस है कि आपकी वो जो लॉकिंग है, बार बार जो साउंड आ रही है, उसको हम प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि टिश्यू और इन्फ्लेम ना हो. कम से कम 6 हफ्ते के लिए हमें स्प्लिंटिंग करना ज़रूरी होता है. ऑल्सो अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा पुरानी है और आपको पेन काफ़ी ज़्यादा है तो स्प्लिंटिंग इज़ नॉट दैट मच हेल्पफुल. अभी जब आप स्प्लिंट पहने रहेंगे 6 हफ्ते के लिए तो आपके हाथ में कुछ स्टिफनेस हो सकता है कि आए. उसको रोकने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो कि करनी है. अगर आपके हाथ में पेन है तो आप दूसरे हाथ से, सपोजिंगली आपके इस हाथ में पेन है, आप खुद इस हाथ को बेंड नहीं करेंगे,
आप अपने दूसरे हाथ से इसको ऐसे पकड़ के बेंड इट 10 to 20 times पॉसिबली, ठीक है। आप कीप इन माइंड कि इस हाथ से आप कोई जोर नहीं लगाएंगे। अगर आपकी कंडीशन पुरानी है और आपको पेन नहीं है, तब आप इसी हाथ से मैनुअली खुद आप ऐसे करके इसको बेंड थोड़ा बहुत कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इट शुड बी पेन फ्री। सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज डिजिट ब्लॉकिंग। इसमें बेसिकली आप करेंगे क्या कि आपको अपने नकल्स को बेंड नहीं होने देना है, बट यू विल बेंड द रेस्ट ऑफ द फिंगर। इसको आप करने के लिए ऐसे हाथ से भी पकड़ सकते हैं, और यू कैन जस्ट keep your finger like this in front of your ring finger, अगर ring finger में है तो, and then try to bend it. What we are doing is we are not putting pressure on the pulley, but we are aiding the movement of tendon through the pulley so that it gradually loosens up. Next exercise is isometric finger flexion. कुछ recent researches से पता लगा है कि आप जब अपनी finger को एक certain angle पे रख के flex करते हैं तो it stretches out your pulley and it creates more space for your tendon to glide through. करनी कैसे है? This is your hand, this is your affected finger. You'll place your other hand like this. Now this is your finger at 45 degree of flexion. इसके बाद आप यहाँ से अपने thumb से इस finger को ऐसे बस you have to just hold it and then you try to bend your finger. We'll hold this contraction for 5 to 10 seconds and repeat this exercise 10 to 15 times. What is happening is जो आपकी यहाँ पे pulley है, when you contract the tendon, which is basically flexor digitorum profundus tendon, this stretches out the pulley and जब आप relax करेंगे उसके बाद probably when you try to bend your hand like this normally, then the tendon will be able to glide more smoothly. अभी bending sending बहुत हो गई है. Now let's focus on the sideways movement, और उसके लिए हम जो एक्सरसाइज करेंगे that is finger abduction and adduction. किसी को समझ में ना आई हो तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा, पढ़ लेना. So what basically you have to do is you have to put your hands like this. जैसे किसी ने बंदूक तानी हो, आप पे ट्रिगर की बात तो हो ही रही है. And you have to stretch out your hands fully, completely, and then close it. Hold for 5 seconds. Hold for 5 seconds. Repeat for 10 to 15 times. हाँ, और ऐसे ही रख के करना जरूरी नहीं है, मैं खाली कैमरे में दिखा रहा हूँ, आप नीचे रख के भी कर सकते हो, नहीं तो कोई हाई फाइव दे के चला जाएगा फालतू में. Now since this whole condition is about gliding of your tendon, अपन कुछ tendon gliding exercises करेंगे. So the first is what I do here, blah blah blah. So what you have to do, you have to keep your hand like this, you'll open it up without bending your fingers, you'll open it up, you close it. Open, close. Repeat 10 to 20 times. Next exercise, touch and trace. करना क्या है? ऐसे करके टच करिए, pull it back. Touch, trace. Touch, trace. Touch, trace. Repeat 10 times. हाँ, ये एक्सरसाइज करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ पेन फ्री रेंज में करना है. अगर इतना बेंड करने पे आपके फिंगर में पेन आ रहा है, देन डोंट डू इट फर्दर. यहीं तक बेंड करिए, पॉसिबली जितना हो सकता है टच करिए एंड ट्रेस. ज्यादा बेंड करेंगे देन इट डजंट सर्व द पर्पस. नेक्स्ट एक्सरसाइज वो है जो करने में हो सकता है कि आपकी थोड़ी कमाई भी हो जाए. करना क्या है? यू हैव टू एक्ट लाइक अ बेगर. कीप योर हैंड्स लाइक दिस. ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज. यू डोंट हैव टू बेंड योर नकल्स, जस्ट अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे. And the next exercise is squeezing a ball, but keep in mind that only do it in the pain-free range. If you cannot bend your hand further than this, don't squeeze a ball, or maybe squeeze a bigger ball. What are you thinking? What are you thinking? I'm asking about a ball, not naughty. Next is MCP joint mobilization. सुनने में खतरनाक लगती है, बट इतनी मुश्किल है नहीं, थोड़ा ध्यान से सुनना बस. Okay, what you have to do? Hold your hand like this, free, and then push it upwards. I don't know if you can see. Close by, push it up, push it up. This is what basically you're doing is you're mobilizing your metacarpophalangeal joint, and it creates more space and prevents the stiffness. See, for each finger 10 times. Up,
and down, up and down. Keep in mind to keep this hand free. Next is icing. आपको अपनी टेंडन की इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए you have to get a ice cube, hold it like this, massage 3 to 4 minutes, enough, 3 to 4 times per day. Next, just opposite, we'll apply some heat and stretch, but only when the condition is not acute, which means if you have just started getting the pain, you don't have to do this one. Now to get some instant pain relief, what you can try is massaging your painful area. So how you can massage is you can keep the hand like this, you can do circular movements, you can do up and down, you can do across, or you can also, what you can do is you can put your hand like this and massage your web space. Try to get in ये वाली जो जगह है ना, this. Try to get in that area and massage, 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 massage. Another technique you can try is you can try putting pressure on the nodule and try to bend your finger. Now maybe this will not give you pain. Now why I'm saying maybe, because this technique doesn't work for everybody, but it might work for you, and if it does, then put pressure, bend your finger around 30 to 50 times and then just relax, maybe then start massaging. Once your pain subsides, you can start with the strengthening exercises of your hand. If you want me to make a video on that, you can drop a comment. Also, remember that I told you that trigger finger is more common in diabetics. And if you too are a diabetic, I have a way for you to cure your diabetes without any medicines. Maja aaya? Now if you want to know more, you can check the link in the description or you can click on the video on the end screen. ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही. अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब कुछ कर दो. आपको पता है क्या क्या करना है, अब तक कर देना चाहिए था वैसे, बट कोई बात नहीं. और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना चाहते हो तो वो ये रहा, और बाकी सारे लिंक्स के लिए यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन. एंड आई एम गोना मीट यू अगेन सम टाइम वेरी सून. बाय बाय.